and the whole idea was to move their TV audience to online. And I Hmm. was just a second year student, and they were paying me what they were paying me. It was already more than what my engineer friends would have made in a traditional TCS job after 4 years of graduation. Wow. Okay, so that kind of threw me in a positive light. कैसे हो भाई? क्या हाल चल रहा है? चल रहा है ब्रो, सैटरडे है, लाइक लास्ट वीक काफी हेक्टिक गया. It's pretty much I have started working with a few newer projects, so been helping them with quite a few things. So लाइक बहुत बता सारी सकते हो चीजों प्रोजेक्ट? में so one particular project that I'm helping these guys on is, I think they are not in stealth mode, so I can say, but at the same time, like we are keeping it kind of low key. But I can give you a little brief. So it's like it relates to news in videos. Okay. हम्म. So that is the overall approach. And I am kind of handling the content and community side of things currently with them. So yeah, been started working with them about a week back. So yeah, pretty interesting. वो लोग का काफी challenging work है, but at the same time it's pretty interesting to work on something like this. Um, pretty good company. हाँ. So अभी just helping them through quite a few things वहाँ से. और personal end में I have started working on some other work on my end. जो I was kind of not putting efforts into for a long time. And now I'm like, since XP got acquired and everything, and I'm like, thoda, theek hai. Now I can put some time into that. So right now I'm just focused into like creating more content for myself. I'm writing an ebook. I've started to write a book as well. So these all things are like in the pipeline. Pata nahi kab jaake khatam hoga, but I've just taken a start on those. Otherwise, I will just keep procrastinating. नाइस. So ये content like I we met because of your content only. Yeah, like I shared one Uh-huh. of your reel on my story, and then we started having conversation. And Right. so content का idea कहाँ से है? Because I know you were working with TagMango as well initially. So like Right. how did your interest went into content? I think it just happened to me all of a sudden. Like most things in my life, to be very honest. I was, excuse me, I was a hardcore coder. Mm-hmm. Okay. So in my class 10, class 11, I was making websites, I was making apps. I was that kind of a guy. I was in and I was someone who knew कि मेरे को तो CS engineer बनना है. Okay, Mm-hmm. that's all that I, because I had, मेरे family से भी वो था कि बनो engineer, and I myself had a lot of interest in computer science. Okay, Mm-hmm. बहुत, I was a nerd on that end. So but one major thing happened when I joined college. कि when I joined college, I saw कि the culture around the college, वो जो rancho वाला feel आया था ना, Mm-hmm. I might थोड़ा सा, I'm not comparing myself to rancho, I'm never not reading this level, but वो 3 years का rancho वाला feel है कि भाई the conversations are around marks. The Mm-hmm. conversations are not around कि अच्छा computer science से क्या बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं. It is not Mm-hmm. that. It was like किसको कितने pointers लाना है, 9 pointer, 10 pointer. That is what all the conversations were. Mm-hmm. And एक तो वो चीज हुआ मेरे साथ. Second was कि I realized कि at that time I did not have the knowledge, of course, but um, I was seeing कि majority of the people, like all the people that I was speaking to, Mm-hmm. for क्या, अच्छा ठीक है, 4 साल बाद क्या, 4 साल तो मैं कंप्यूटर साइंस कर लूंगा, उसके बाद क्या. Mm-hmm. So the people that I was talking to, these people, the straightforward answer would be, "Are you will join TCS, Wipro, Cognizant, something." Mm-hmm. And that thought did not sit well with me. Okay. Because I realized that I'm a hardcore, even though I like coding a lot, I do not like, I do not want to do, let's say, wo service uh, based job for a living for a long period of my time. I mean,
with all due respect to everybody who does it, I have a lot of friends who work in TCS everywhere, but I personally did not feel that I fit well into that culture. Hmm. Okay, so on the first year itself, I became very clear that I'm not going to sit for these. So, Hmm. मतलब first year से मेरा वो था कि I'm not going to sit for placements. It's going to be completely on me to do stuff. Hmm. And I was anyway a startup kind of guy. I was always wanted to make something of my own or Hmm. create something, even with other people, create something that makes some form of an impact. I don't want to be one in 50,000 people, right? Hmm. So that was one of those ideas. So I started my own startup in college in my first year. It was like a leap. "Oh, chalo, theek hai, karte hain." Hmm. It was an online media publishing startup, and somehow it ran its course well. I won't say it went bad. It ran its course well. We were revenue positive. We did quite a few things. We partnered with IITs, IIMs, and the likes. बहुत कुछ हुआ. We got about 40 plus team members within a year. So pretty much everything was going good. Hmm. But then like I, as an entrepreneur, was also young, so I made some mistakes on my end also. So then I said that okay, let's just I just gave the responsibility to somebody else, and I said that I need to learn more. So I started working with other people. So when I started working with other people, that is where the magic started happening. Hmm. So when I started working with other people, I was working in freelance projects. I was working on because for 1.5 years I was already doing hardcore digital marketing for my own company. I Hmm. got the experience. Okay, Hmm. at that moment I got the experience, and I was like, okay, this is the time. This is the time. Let's just move to it. That was the idea. Okay, let's just move to it. And when I started doing marketing, somehow or the other, I think I started working with a few content creators Hmm. at that time. So these people were creating content. They said that, hey, you understand content quite well. Would you come work for me? Hmm. And I started managing their brands. I started managing their content. So that was like my start with the creator economy. So this was in my Hmm. second year of college. Okay, so yeah, that happened, and from then on it just rolled off to that, because I realized that I love social media. I understand content really well. I understand the pulse of social media. So wahan se I started working with a lot of creators. Or if TagMango happened, then XP happened, and now I've worked with, I think, if not in direct senses, I've worked with, at least in direct contact, I've worked with more than 200 creators easily, in some sense. Yeah. तो ये कॉलेज कल्चर लाइक इवन आई हैव सीन कि लोग अभी सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं एंड ऑल दैट बट लाइक इन माय कॉलेज पर्टिकुलरली मैंने ये देखा है कि जो पैशनेट लोग हैं ना यू Uh-huh. लाइक जो पैशन सोच के आते हैं वहां पे कि चलो मैं कॉलेज जाके कोडिंग करूंगा आई गेन समथिंग आई डू समथिंग जो पहले से उनका लेट्स से 11th 12th में एक विजन बन चुका है very small amount of people can sustain that vision in that 4 year span Right. क्योंकि Correct. कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है Mm-hmm. तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को देखते हो मार्क्स के पीछे भाग रहा है तुम तुम्हारी क्रश को देखते हो मार्क्स के पीछे भाग रही है तुम पूरी क्लास को देख रहे हो मार्क्स के पीछे भाग रहा है प्रोफेसर तुम्हें मार्क्स के पीछे टॉन्ट मार रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है तो हाउ डिड यू Right. सस्टेन्ड दैट एटमोसफियर कि नहीं यार मेरे को तो मेरे को जमेगा नहीं लाइक आई फील क्योंकि because you started your startup in first year itself I think that could have helped you a lot in getting getting much more in control and not going into the flow I feel. I would say it's the opposite. Mm-hmm. I'll tell you why. I'll tell you Mm-hmm. why. I did not sustain it. It was a really bad blow on myself as well. Okay. In my first year, I scored really, really less, which was not, I mean, just to give you some perspective. Okay. Up to class 10, 11, I was the topper of my school. Okay. Mm-hmm. Okay. So एक वो बन जाता है ना कि अच्छा ये तो कर ही लेगा, and you Mm-hmm. also have some expectations from myself कि अच्छा academics is not something that I have to worry about. ये वाला होता है ना. But somehow मतलब उस टाइम पे मेरे लाइफ में a lot of other things were also kind of going on. ठीक है. So उसका प्रेशर थोड़ा फैमिली का थोड़ा ये वो था उस टाइम पे. Mm-hmm. So उस टाइम पे I was like कि
okay, this is not going so well, but I हम्म just have to go through it because एक तो है कि हम लोग का कॉलेज का था एक स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी. ओके, हम्म स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मतलब 75 to 80% अगर तुम ना लाओ तो मार देगा वो लोग, वो दे विल हम्म नॉट लेट यू सिट. But हम्म one thing that really, really happened good with me is that, sorry for that. Um, One thing that really, really good happened with me was कि I was always someone जिसका टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. हम्म Okay, teachers, administrative. So हम्म since these people, so I pretty much spoke to them कि बॉस देखो, I am not gonna work. I'm not gonna sit for my placements, most probably. I just want to make sure that I get enough time to build my skills otherwise. So हम्म I will just come for exams. हम्म ठीक है. तो मैं क्या करता था, आई वॉज वर्किंग फुल टाइम विद अदर पीपल. एग्जाम मतलब कॉलेज क्यों नहीं आ रहे उसके लिए आई वॉज जस्ट गिविंग देम एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट. ठीक है, हम्म मैं उनको बोल रहा था कि इंटर्नशिप कर रहा हूँ इसीलिए नहीं दे रहा था. इवन एंड दीज हम्म गाइज वर नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी एल्स फॉर्चुनेटली, बट दे डिड इट फॉर मी, हम्म which gave me enough time. So to answer your question, I did not handle that blow very well because my family also did not handle that blow. हम्म All of a sudden a 9 pointer drops down to so less points all of a हम्म sudden. And ये वो family को भी लगता है ना, and you also lose हम्म confidence on yourself. And you feel कि अच्छा क्या is it like that I'm doing my startup इसीलिए नहीं हो रहा है and all that stuff. हम्म But and a second blow that came to hurt me a lot is second year में I had my this what do you call it, सेकेंड ईयर में मुझे डेंगू हो गया था. हम्म ओके, सो डेंगू होने के कारण आई कुड नॉट रियली स्टडी एट ऑल. मैं कुछ कुछ एग्जाम दिया था, आई कुड नॉट स्लीप स्टेप फॉर द अदर वंस. इट वाज रियली रियली बैड. एज अ रिजल्ट आई हैड टू रिपीट द ईयर बिकॉज वो हम्म मेरा होता है कि if you don't get enough marks in more than four subjects, it's bad. You have to repeat the year. So I had to repeat the year. So it was really bad time for me. Okay. So, and you understand as a second year student, if you see that all of your peers are moving to third year and you are stuck at हम्म second year, it is not digestible enough, right? हम्म तो ये वाला तो होता है. So it was I'm not gonna make a flowery picture of it, but at the same time, since was second year, was I was pretty much I had pretty much enough time to myself, right? हम्म I was able to explore, and that made all the difference. What I mean by exploring is I was working freelancing. I joined these few content creators to help their content. हम्म I joined some other companies also. On my second year, I got this offer from I not just offer. I ended up joining this company as well, which is Calcutta News, which is West Bengal's one of the leading Bengali news channels. हम्म And they offered me the position of head of digital marketing. And the whole idea was to move their TV audience to online. And I हम्म was just a second year student. And they were paying me what they were paying me. It was already more than what my engineer friends would have made in a traditional TCS job after 4 years of graduation. वाह Okay. So that kind of threw me in a positive light कि अच्छा ठीक है, now ये तो हो गया है, but at the same time this is going right in my family, हम्म going right in my life. So my family also kind of eased up कि चलो ठीक है, हम्म कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हाँ अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बंदा अगर एकेडमिक्स में कुछ गलत हो गया है इसका, बट द सेम टाइम दिस गाय इज फिगरिंग थिंग्स आउट हिमसेल्फ. हाँ तो वो वाला एक कॉन्फिडेंस आ जाता एक है पैसे फैमिली की को. सेफ्टी हो जाती हाँ कि अच्छा ठीक है, है अगर कमा तो इसका लेगा मतलब कमा तो लेगा, बच्चा हाँ स्मार्ट है, कमा तो लेगा. ठीक है, हाँ ये वाला कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना पेरेंट्स को, तो देन आई लिटरली सॉ माय पेरेंट्स चेंज. ठीक है, हम्म दैट वाज एन अमेजिंग पीरियड ऑफ टाइम विच आई टेल ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय जूनियर्स एंड एवरीथिंग, जो बोलते हैं कि पेरेंट्स मुझे ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे हम्म रहे. आई जस्ट टेल देम, बस तुम एक लीप ले, यू यू जस्ट टेक अ लीप. तुम एक महीने बाद अगर तुम किसी को पापा को आके 5,000 रुपए भी देगा ना कि हम्म आई हैव अर्नड इट माई सेल्फ, तुम आगे 5,000 पापा को दे कि पापा आई हैव अर्नड इट इन द लास्ट मंथ.
5,000 ये लीजिए. That gives the parents so much confidence in you कि अगर आज ये 5,000 कमा रहा है तो 3-4 साल बाद तो ये दिस गाय विल फिगर आउट एटलीस्ट ये 25-30 हजार तो मिनिमम कमा लेगा. ठीक है कि उससे उससे प्रॉब्लम नहीं है. सो वो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक अरे नहीं बोलेंगे, अरे माय पेरेंट्स डोंट लेट मी डू इट, बट अब्बा नहीं मानेंगे. एंड आई वाज अ प्रॉपर अब्बा नहीं मानेंगे. आई हैड टू लाई टू माय फादर टू गो टू जॉब्स. ओके, बिकॉज माय फादर वाज लाइक क्यों करना है, क्यों करना है, ये करने क्यों, पढ़ाई करो एंड ऑल दैट. ही वाज नॉट लाइक कि पढ़ाई करो, ही वाज लाइक you don't have to earn money right now. But I was like, no, I need to build my skills. Right? So, and I was not getting paid like super handsomely usse pehle, but at the same time I was like, I have to build my skills. I told my father ki I have mujhe college se internship करना ही है. I have to send them, इसीलिए mandatory है, that is why I have to go. And I was traveling 4 hours every day just to work with these people. ठीक है. So I put in वो जो quote unquote hustle होता है, I put in that hustle quite early in my life, from my first year of college itself. तो वो जब वो those things were going quite good ना, तो बाकी चीजें it just kind of कि अच्छा ठीक है तुम बस average marks ला ले, then it's चल जाएगा. खाली डिग्री ला ले. मतलब I also went to get my degree to after 1.5 years of my graduation. So that is a thing कि अभी तक मुझे कहीं पे मेरा डिग्री दिखाना नहीं पड़ा. और मार्क्स नहीं बोलना पड़ा because the kind of jobs that I got into, it was always my skills or my work experience that spoke for myself. तो ये एक चीज which a lot of youngsters need to keep in mind कि एक चीज खराब हो रहा है doesn't mean कि तुम्हारा पूरा लाइफ खराब हो जाएगा. Nice. तो like जब हम कंटेंट की बात करते हैं, लाइक यू आर इनटू द क्रिएटर इकोनॉमी. सो अभी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है रील्स, शॉर्ट कंटेंट. मेजॉरिटी पीपल आर इनटू लाइक ऑलमोस्ट कोई स्टार्टअप कर रहा है कंटेंट में, कोई शॉर्ट कंटेंट का अपना खुद का प्लेटफॉर्म ला रहे हैं. रील्स पे तो आ ही रहे हैं लोग, यूट्यूब पे भी अब लोग आ रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन नहीं है, यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइबर लाके मोनेटाइजेशन कर देंगे. एंड लाइक you are also working in project and bringing news on social media. Right. So what trend do you see in content creation in upcoming future? Like short content किस लेवल पे penetrate कर सकते? See, let me think. I think so. There are two groups. Let's talk about two groups. Okay. A group hai, which is already an internet native. So people like you, me, urban people, jo for the past 5 years, yeah, 10 years, whatever it is, we have been seeing content online in some form. ठीक है. It would be simply कि we were जैसे वो Facebook, जब Facebook पे वीडियोस आते थे ज्यादा करके, those Facebook times जो वो फनी वीडियोस आते थे, sketch comedy जो जब टाइम पे थी, ठीक है, जब when mostly sane was relevant, ठीक है. So those no hate to mostly sane fans, just giving you an idea कि we belong to that era कि we have seen these creators grow. We have seen the first generation of YouTubers, right? First generation of YouTubers, like mostly same Mumbaikar Nikhil, like all these people, we have seen कि अच्छा ठीक है भाई ऐसा भी हो सकता है. रणवीर अलाहाबादिया का initial days, we saw these people, bare biceps and everything, right? So that is the idea कि this is one group, okay? इन लोगों के लिए when short video came in, now when short video came in, as a consumer, we were kind of resisting the idea of short videos. Do you remember? Like as someone who's कि भाई शॉर्ट कंटेंट कि भाई क्या because ये क्या हो रहा है. Now the thing was कि इस ग्रुप के लिए प्रॉब्लम था ये, बिकॉज ये शॉर्ट वीडियो है एंड वी वर नॉट कि अच्छा ठीक है भाई 15 सेकंड में ये क्या देख ले. इट वाज वेरी एलियन थिंग टू अस.
But what made this penetration possible was this other group, which was not an internet native. So हम्म what I mean by that is these guys were just ये जो teenagers हम्म who discovered जिनके that हाथ में this नया thing नया called फोन आया TikTok, था नया नया फोन आया है, हम्म जियो के प्राइसेस घट गए, ऑनलाइन हम्म तुम कुछ भी कर सकते हो, यू वाज जस्ट पेइंग अराउंड 150 रुपीज अ मंथ जस्ट हम्म फॉर 1 GB ऑफ डेटा एवरी डे. हम्म दैट इज समथिंग जो मेड द चेंज कि अभी जो इन लोगों के फोन आया, सो दीज पीपल डिस्कवर्ड शॉर्ट वीडियो फॉर्म प्राइमरली. ठीक हम्म है, आई वुड से. तो जब ये हुआ ना, तो अभी वो लोग टीनेजर्स है, सो लॉट ऑफ दीज पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट जिसको हम लोग क्रिंज कंटेंट बोलते हैं हम्म टिकटॉक पे एंड एवरीथिंग. These guys started posting these things heavily. And फिर ये जो फर्स्ट ग्रुप था, these guys realized अरे भाई, मैं एक साल काम करके I'm getting to 100,000 views. ये लोग एक एक ऐसी चीजें बना के then making 500,000 views जो हम्म टिकटॉक पे हो रहा था, राइट? हम्म सो फिर these creators also started developing कि मुझे भी शॉर्ट वीडियो कंटेंट करना है. हम्म एंड वो जो इतने सारे लोग आ गए, नाउ when we think of social media, the first thing that comes to our mind is short video content. हम्म We don't think about tweets, we don't think about YouTube, we think हम्म about reels, we think about TikTok, we think about Moj, ye wo, all that हम्म stuff. Okay. So this is the distinction. So penetration, I think penetration ho chuka hai on that. हम्म I think short video content is pretty much, I see, I think it has penetrated all demographics, to be very honest. हम्म um I see my father scrolling through Facebook reels all day. हम्म Sometimes वो बैठे हुए हैं and he will just scroll through Facebook reels. हम्म मैं उतना reels नहीं देखता जितना मेरे father देखते हैं. ठीक है. So that is the point कि it is so addictive in nature anyway कि तुमको वो it will just get into you. जैसे if you open YouTube sometimes, so YouTube is testing this, you will हम्म consciously test this sometimes. Half of the times you open YouTube, you will see that it opens in the Shorts tab. Half of the times you open YouTube app, you will see that it opens in the Home tab. So YouTube is possibly doing some form of an A/B testing key हम्म what people are doing. Okay. हम्म So my idea is कि हो चुका है. Now going forward, short video form, unless they change it to a different completely कुछ और आ जाता है, it will start to kind of, जैसे ये पीक आया ना, उसके बाद हम्म थोड़ा सा अभी नीचे जाएगा इन अ सेंस कि थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड होगा. हम्म ठीक है. शॉर्ट प्लेइंग, जैसे अभी क्या हो रहा था कि अगर तुम शॉर्ट वीडियो नहीं करोगे तो यू विल नॉट ग्रो ऑन सोशल मीडिया, हम्म राइट? बहुत पहले से हो रहा था. बट टेक अप प्रखर, हम्म प्रखर completely grew from all उसका यूट्यूब मेन यूट्यूब long लाइव long YouTube हम्म content. हाँ, main YouTube. Now he's trying to do some other content on reels and stuff, हम्म right? So there are possibilities, and I think ये बढ़ेगा because people are so थोड़ा सैचुरेट हो गया ना. Now people, at least some, not everybody, but कुछ groups of people would be like, okay, this is the time I want to create long form content. और ये हम्म इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है. हम्म International level पे भी new YouTubers are coming in and they are dominating हम्म without creating shorts. Without creating shorts, they are dominating. So I think it is possible, but वो थोड़ा level playing field हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, just to grow तुमको वो नहीं करना है. I think हम्म that is what's gonna be. ट्रू क्योंकि इवन आवर क्रिएटर्स जो हमारे जो रील्स से मिलियन मिलियन हाफ मिलियन तक पहुंचे हैं इवन दे आर नाउ टेलिंग इन द स्टोरीज की रील्स में इतना ही पता होगा ज्यादा जानना है तो यूट्यूब चैनल पे Because it makes sense ना. देखो, हम्म प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी इज द मेन क्वेश्चन. हम्म आज when you are, let's say when you have reels पे 1 million views लाना is so easy, हम्म especially when it comes, especially if you're creating like very light hearted content. ठीक है, हम्म कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक वाला हो गया, कुछ समथिंग, हम्म कुछ फनी हो गया, कुछ भी, you हम्म you will just see it and you will be like हाँ हाँ nice like हम्म करके तुम निकल गए, right? You build no connection with that हम्म Instagrammer, right? तुम उसके साथ बनाते हो
only if like you have been seeing that person over and over and over and over. जैसे one example would be Ankur Warikoo, right? Ankur Warikoo के reels go so viral and go so good because उनको तुम बार बार देख रहे हो and they are putting in some form of content which makes you think. ठीक है कि अगर वो बोल रहा है कि भाई एफडी में पैसे मत डाल, तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि क्यों नहीं डालू, मेरे पापा तो डालते हैं, व्हाई इज इट बैड? तो दैट इज द आइडिया कि अथॉरिटी, तो वो तुम 15 सेकंड में अथॉरिटी तो तुम बिल्ड नहीं कर पा रहे, दैट इज इम्पॉसिबल, बट वो तुम्हारा फनल हो सकता है विच गेट्स यू टू यूट्यूब. अब जब तुम यूट्यूब पे किसी को देख रहे हो फॉर इवन 5 मिनट्स, तो तुम तो यू विल बिल्ड, दैट पर्सन विल बिल्ड एन अथॉरिटी ऑन यू इमीडिएटली. वो हो जाता है. सो दैट इज द आइडिया. अथॉरिटी इज द गेम ऑफ सोशल मीडिया. तुम फॉलोअर्स, आई ऑलवेज से कि फॉलोअर्स डजंट मैटर एनीमोर ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, फॉलोअर्स, बिकॉज यू आर जस्ट लिमिटेड ऑन द मर्सी ऑफ द एल्गोरिथम. ठीक है, you're just limited on the mercy of the algorithm. Followers doesn't matter. Relevance matters. How relevant you are right now. There are a lot of dead YouTube channels with 200 million. I mean 2 million followers. There are a lot of dead YouTube channels, but you have to make sure कि अच्छा आ रहा है. So that relevance is the game. So I think long form में वही होगा कि long term में ये होगा कि short form you will use the funnel to get people onto your YouTube or newsletter or something, because वहां पे authority build कर सकते हैं जहां पे जाके you can later sell your courses for millions of dollars. ठीक है, so that is the whole idea of it. Like YouTube पे you said कि हम अगर 5 मिनट भी देखते हैं किसी को तो एक अथॉरिटी बन जाती है. It's because कि यार एटलीस्ट हमने एक साइड की पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली. 15 सेकंड में इट्स लाइक, क्योंकि 15 सेकंड में हमें ऑडियंस को एंगेज करना होता है शॉर्ट कंटेंट में, हम क्या करते हैं, उनको आधी इंफॉर्मेशन दे देते हैं या उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको वो या तो भूल जाए 2 सेकंड में या उनको कॉन्स्टेंटली सोचते हैं. वी जस्ट वांट ऑडियंस टू एंगेज, गेट द व्यू, गेट द लाइक एंड गेट आउट. करेक्ट. जबकि हम यूट्यूब पे बात करें तो हमें एक साइड की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है. इट इज लाइक वॉचिंग अ लेक्चर. जब आप क्लास में बैठ के टीचर का लेक्चर सुन के जाते हो, आपको चाहे वो लेक्चर पसंद ना आए या आपको कोई वैल्यू ना मिले, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट एटलीस्ट आपने एक साइड की कॉन्वर्सेशन सुन ली है. यू हैव बीन सैटिस्फैक्टोरली हर्ड, एंड आई फील दैट Exactly. makes the authority. More than that, what I would say is कि think of it. जब तुम रील्स पे स्क्रॉल कर रहे हो, ओके, स्क्रॉल करे जा रहे हो, द वीडियोस प्ले बाय डिफॉल्ट. ठीक है, डिफॉल्ट तुम प्ले कर लिया, इट्स इंटरेस्टिंग, ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, नाइस, लाइक, हाँ, फनी, नॉट फनी. ये तुम्हारा इमोशन चलता रहा, राइट? यू आर ऑलवेज इन थिंक कि अच्छा नेक्स्ट वाला वीडियो अच्छा होगा, आई होपफुली अच्छा हो. ठीक है, दैट इज व्हाट द जो बोलते हैं ना कि द एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड इज डोपामिन, राइट? सो वही वाला सीन. नाउ यहाँ पे, now when you go to YouTube on a long form video, let's say it's a 30-minute long video. Say I am someone who consumes very long videos. I will easily consume 40-minute long videos on YouTube. Okay. But I might not do it एक बार में, but sometimes I would just break it off and I would really listen to this one person if I need to. So क्या होता है ना, you are making a conscious choice to listen to this person. जब तुम YouTube पे जा रहे हो and you're seeing कि अच्छा ये टाइटल है, ये थंबनेल है, unless it is something जो which is like massively clickbaity or whatever, you are making a conscious choice कि I want to listen to this guy, right? You want to listen to this guy, so you go there and you listen to this person for 10-20 minutes आराम से, भाई आराम से, because it's like you have constantly chosen to go into this room where this guy is talking. Reels में तुम एक जगह पे बैठे हो and people are coming and talking, तो अथॉरिटी कहाँ पे Reels is like तुम्हारा टाइम टेबल पहले से सेट है, तुम्हें यहाँ जाना है. other people are coming and saying कि भाई मेरे को देखो. और यहाँ पे तुम YouTube पे क्या कर रहे हो, if it's a long form video,
तुम जा रहे हो to see like what this guy has to say. So हम्म it's your investment in the video is more than this guy's investment. हम्म So ये एक authority बन जाती है यहाँ पे. हम्म That is why teachers do really well on YouTube, हम्म right? Physics wala ka you have हम्म seen what has happened, right? हम्म It is just because of that. Why teachers dominate YouTube हम्म globally. So हम्म this is, I mean, when I say teachers, teachers doesn't mean like subject teachers. Teachers mean self-improvement YouTube हम्म videos as well, like Matt Diavella, Hamza, all these people. They're doing freakishly good on this. हम्म So यही सीन है कि they have an authority over your life. Gary V क्यों बढ़ा? The entire point was कि when you were doing something, you saw कि अच्छा इस टाइम पे गैरी वी क्या कर रहा होगा. अच्छा गैरी वी would have said eat shit and do your work. हम्म तो मैं वही करता हूँ. This is the whole idea of it, right? So I हम्म think yeah, that is where the authority game plays. हम्म So, like, what do you think in future? Like you said, like short form content, like forget about short form content. Overall content, क्या education को किस level पे replace कर सकता है? Formal education. Let me think about it. Hmm. देखो, formal education. Now, when we talk about formal education, we have to think of a few things. ठीक है? Hmm. कि what kind of thing is it? Hmm. Content, just online content. When it comes Hmm. to high stakes education, so what I mean by high stakes education is something like a medicine, doctor, lawyers, okay, um, people like pilots, okay, Hmm. these people. Abhi, when I'm coding an app, as a Hmm. CSC engineer, जो तुम घंटा कुछ नहीं सीखते हो कॉलेज में. I'll be very honest. ठीक है. Hmm. Um, you only learn stuff while मतलब तुम सीखते हो like the background of it and everything. Hmm. But if you want to become a coder in 3 months, ditch your college, go to Code Academy and practice. Hmm. That's it. ठीक है. तो वो करो. बट अगर तुमको मतलब फंडामेंटल्स सीखना है कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हाउ अ कंप्यूटर इज बिल्ट, जो मेजरली कॉलेजेस में सिखाया जाता है, विच इज ऑल्सो गुड फंडामेंटल टू बिगिन विथ. बट जैसे यू माइट हैव हर्ड कि बहुत सारे इंजीनियर्स वी कंप्लेन अबाउट दिस थिंग कि द मोमेंट वी स्टेप, जैसे 4 साल पढ़ाई करने के बाद, द मोमेंट वी स्टेप इन टू अ न्यू जॉब, we are expected to unlearn everything that we have learned in the last 4 years. Hmm. So ये वाला सीन हो जाता है एक. ठीक है. Hmm. एंड देन यू आर सपोज टू लर्न न्यू फॉर्म्स ऑफ कोडिंग. तो ये वाला एक चीज है. सो व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज कि मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया था, बट द पॉइंट इज कि इफ यू आर इन नॉट अ हाई स्टेक गेम, सो जैसे आई वुड नेवर ट्रस्ट अ डॉक्टर हु हैज जस्ट लर्न फ्रॉम यूट्यूब, Hmm. राइट? यूट्यूब पे ऑफ कोर्स आई थिंक यूट्यूब पे तुमको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे. इवन मे बी एमबीबीएस डॉक्टर्स लर्न फ्रॉम यूट्यूब, आई एम Hmm. अज्यूमिंग. ओके. बट if there is no degree behind that person, would I offer them up my body कि भाई हाँ काम करो इस पे? I Hmm. will not let them. So it is Hmm. not the education, it is the authority that. So जैसे MBBS degree और उन लोग का I think जैसे lawyers का होता है bar, which is Hmm. the bar council होता है ना lawyers का. Hmm. So if the bar council doesn't give you a license, so Nice. you will not be able to practice Hmm. law. ठीक है, even if you have a degree. So that's the idea. Similarly, I think there is something for the doctors as well, some kind of Even in association. pharmacy. So even in pharmacy, so these are high Hmm. stake games, right? So Hmm. you cannot just say कि भाई आज मैं doctor हूँ. ठीक है. Hmm. You can, even if you know your stuff, take it. Hmm. Even if you know your stuff, you will not be able to get that thing. So Hmm. I'm not talking about these people, but let's say talking about something like a Like let coding. us talk about school education जहाँ पे high stake games नहीं होते. हाँ, now school education के बारे में I feel like this is my idea of it कि right now अगर ये high stake games नहीं है, Hmm. college is pretty much useless. Okay, Hmm. I say this. College is useless because कॉलेज में, but that is my entire thing with online colleges कि online colleges जो हो रहे हैं अभी,
पैंडेमिक में हुए थे. If you do a online college for 4 years, it doesn't make sense for something like if you're doing computer science and engineering. तुम 3 महीने बैठो यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट देखो, you will start learning. 4 साल में तुम whatever you would have spent in engineering, तुम उससे कहीं ज्यादा कमा लोगे within 4 years. So that is my entire idea. Now, when it comes to school education, that is something which I have a problem with, because school education, I feel कि you cannot replace school education for one reason. Schools, वो जो टाइम होता है ना स्कूल का, that is the time you need to be in a school environment for one reason, कि तुम तब friends बनाते हो. You get your first social interactions during that time. You see the first authorities during that time. Beyond your parents, तुम teachers को देखते हो, तुम administration को देखते हो. You're so curious during that time. You need some form of outside influence on you, not just your parents. जैसे ये जो होम स्कूलिंग का कल्चर, आई थिंक इट हैज नॉट कम टू इंडिया, बट अमेरिका में है. I think it is not that good for I am someone ki bhai, let kids be kids, let kids do whatever the hell we want. Just I am a big believer in कि अगर, like, it might be a little bit controversial, but if two kids, I would specifically say two male kids, okay, अगर उन लोगों का झगड़ा हो रहा है, let's say कुछ भी, okay, झगड़ा हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, let them do it. Because वो जो बड़े, भाई तुमने भी किया है, हमने भी किया है, ठीक है, वो जब मारपीट करते हैं, we understand कि that is a natural form of aggression we have within ourselves, जो we need to get out. So कभी कभी ऐसे friends भी होता है, भाई चल मारपीट करते हैं, right? That was how we were. So that is the whole idea of it. I feel कि एक level पे you need to have these outside experiences beyond your thing, which cannot, तुम सब्जेक्ट तो सिखा दोगे, जैसे हम लोग कभी तो ट्यूशन तो था ही कुछ ना कुछ, अपार्ट फ्रॉम स्कूल कुछ ना कुछ स्कूल में तो जाते थे, पढ़ता पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी, बाहर जाके वी वर एनीवे डूइंग स्टफ. सो दैट इज द एंटायर आइडिया कि स्कूल, आई थिंक स्कूल शुड नॉट बी रिप्लेस्ड. एटलीस्ट उसके formative, yeah, tuitions can be replaced. I don't think that you need a good tuition अगर तुम्हारे पास YouTube है, you know how to work around YouTube, because YouTube पे ही teachers आ गए हैं अभी. You'll see कि I have this cousin of mine who studies in class 5 or 6, और उसको मैंने so her mom, instead of putting her in tuition, what she did was she opened YouTube. She learned from these teachers on those specific chapters herself, and then she made her daughter learn. Okay, so that was an interesting take as well. So I think school ko replace mat karo just because of the natures of school. Offline schools, I think are still very much relevant. और तुम school level पे नहीं बोल सकते कि it's a cohort based course में join कर लो and everything. थोड़ा उसको दो till the time this guy is at least 5, 15, 16. At least let them be in school, and then, yeah, but अगर तुमको college replace करना है तो let it do it. I don't think that it would make sense to go into a college 20 years down the line. I feel that college, like जो college का infrastructure है, I think it is much more, it can be converted into research labs, क्योंकि वैसे भी इंडिया में research का infrastructure बहुत कम है. And if we want to build more on infrastructure, and if we think that we can replace the courses of college which are not that high stakes, then I think we can use those infrastructure into research oriented stuff. I feel, क्योंकि like I'm doing physics honors, and I like, to be very honest, physics honors में MSc is equal to BTech. 3 साल का बैचलर्स प्लस 2 साल का मास्टर्स इक्वल्स टू बीटेक, क्योंकि बीएससी की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में. ना कोई तुम्हें जॉब देगा, ना तुम्हें कहीं पे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. तुम ज्यादा से ज्यादा 11th-12th का ट्यूशन ले सकते, या फिर बिकॉज तुम्हें बीएड भी करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कहीं पे फॉर्मली टीचिंग की जॉब चाहिए, और उसमें भी कंपटीशन में एमएससी
candidates are much more. Right. So I think colleges can the infrastructure of college can be much more utilized in research work, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास कुछ ऐसी फैकल्टीज तो हैं जिन्होंने फाड़ रखा है. हर कॉलेज में दो या तीन ऐसी फैकल्टी होगी है जिन्होंने हाँ. फाड़ रखा है लाइफ में, तभी वो इतनी हायर पोजीशन में है उस यूनिवर्सिटी के. True. देन यूज देम इन रिसर्च. उनको क्यों तुम Right. एडमिनिस्ट्रेशन में बिना लाइक सिर्फ उनके अचीवमेंट्स के बेसिस पे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों घुसा रहे हो? एंड आई थिंक दीज काइंड ऑफ फैकल्टीज आर मच मोर यूजफुल टू एक्चुअली बूस्ट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. It and you pose a very important point. I think I did not see it this way, but I agree to you. I had this one teacher in college. So she was the person Joe, I think is was abhi, then she left, of course, but she was the most overachieved person, overachiever जैसे बोलते हैं ना. She was the overachiever of the faculties. ठीक है. She studied in massive universities. She had connections to so many people. She was herself so good at what she did. And she used to study, I mean, she used to teach us physics. ठीक है. मतलब कुछ classes में लेते थे. Um, the whole idea about the entire thing was कि we were working, and but it did not why she was so, I would say, crucial to our lives. She made this one club, okay, which was a DST करके एक था, which is Department of Science and Technology. Government sponsored करती थी, because government was sponsoring, and she was doing these camps for underprivileged children, and we were the one handling the entire thing. ठीक है. So वो जो हम लोग साल में एक दो बार करते थे ना, that made us such good managers, that made us such good speakers as well. Ki at this point, and she herself used to do, she herself was completing her PhD उस time पे. ठीक है. So and she had massive knowledge of physics, मतलब कुछ and she was bringing us like telescopes and everything. तो वो जो students का रहता है ना कि अच्छा ठीक है भाई, कोई तो है who's willing to fuel our curiosity. So and it's not just कि तुम syllabus देख लो PDF से. It was not that. They were trying to do exactly this. So हाँ, मतलब the point being कि I completely agree with you. I think ये research faculties, I think all faculties should be involved in some form of research in whatever capacity they are. तुम उसको सिर्फ इसके लिए मत लो, because वो एक रिपल इफेक्ट बनाता है ऑन द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि भाई ये खुद भी कुछ कर रहा है. ऐसा नहीं है कि जिसका सिर्फ काम है कि तुम आके बस उसको सिलेबस पे ये है बड़ा बोल दो एंड देन इट्स डन. एंड आई थिंक यूनिवर्सिटीज लाइक इंडिया में लाइक जो IITs IIMs इनको क्यों इतना माना जाता है, बिकॉज आई फील कि इट इज नॉट ओनली अबाउट जॉब्स. जॉब करनी है तो तुम स्किल सेट लाइक यू सेड, तुम यूट्यूब से कहीं से भी ऑनलाइन सीख के तुम स्किल सेट बना के जॉब ले सकते हो, कोई भी बड़ी कंपनी फाड़ सकते हो. बट आई थिंक व्हाई कॉलेजेस लाइक जो भी वर्ल्ड रैंकिंग्स में कॉलेजेस है, बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर माय मास्टर्स कि व्हाई आर दे एट द टॉप, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करते. दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स. लाइक मेरी अभी जो यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, इट इज रैंकिंग 65th. It is in top 100 universities in India. Right. And the kind of opportunities I get is massive. मैं अगर मुझे BSc फिजिक्स करनी होती मेरे जगह से, तो मैं 20-25 हजार में कोई स्कॉलरशिप निकाल के कर लेता. करेक्ट. बट दिस यूनिवर्सिटी इज गिविंग मी मैसिव अपॉर्चुनिटीज कि मैं BSc करते करते 6 महीने के अंदर कोडिंग सीख के माइक्रोसॉफ्ट फाड़ दूं. मुझे इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलती है. प्लस आई हैव द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सप्रेसिंग, लाइक मेरे यहाँ पे हमारा फाइनल ईयर अभी आ रहा है एंड वी हैव टू डू डेजर्टेशन. एंड डेजर्टेशन आप उसमें कर सकते हो जो फैकल्टी जिस
फील्ड में है उस फील्ड में फैकल्टी के गाइडेंस में राइट, आप एक थीसिस लिखो। राइट। एंड हाँ। मुझे जिस फील्ड में करना है वो फील्ड का कोई कोर्स ही नहीं है इंडिया में, ना ही उसकी कोई फैकल्टीज है, अच्छा। मुझे जिसमें डिसर्टेशन करना है, बट आई एम गेटिंग हम्म। सपोर्ट फ्रॉम द डीन कि तुम करो, नो इश्यूज, हम्म। वी विल, दैट इज वेरी गुड। एंड आई एम गेटिंग सपोर्ट कि तुम अगर सपोज मुझे कोई हेल्थ साइंसेस से हेल्प चाहिए, हेल्थ साइंसेस के प्रोफेसर अवेलेबल है, लिबरल स्टडी से चाहिए, लिबरल स्टडी से प्रोफेसर अवेलेबल है, हर जगह हम्म। से हर चीज़ के प्रोफेसर अवेलेबल हैं मेरे लिए टू राइट। get to solve the doubt wherever I get stuck in. And I think these kind of करेक्ट। opportunities, which makes universities more relevant, the clubs which exist, एग्जैक्टली, more than एग्जैक्टली, just इट्स द education and degree. दैट इज द पॉइंट कि तुम कॉलेज जाते हो. I'll tell you a story like why I made this decision. A lot of people say कि तुम क्यों नहीं गए. So I got in 2020 I sat for my MBA exams. Okay. Hmm. I It was not like I prepared for like 1.5 months, 2 months max. Okay. Hmm. And then I sat for a few exams. I got into, I would say, one of the tier one or tier 1.5 colleges, whatever you want to call it. Hmm. That comes under the top 20 colleges of India in MBA. Okay. Hmm. I got admitted to that. I got the opportunity to get into that college. Okay. Hmm. Acceptance from that college. But उस टाइम पे आया pandemic. Hmm. Okay. These people said, kids, the classes are gonna be online. Hmm. Okay. And MBA ka, you will spend easily around 20 lakhs for an Hmm. MBA. Okay. आराम से. So my point was कि बस देखो, मैं MBA करूंगा. I'll do it online. Hmm. So I have already so much of work experience from first year of college. जहाँ पे I already know most of the things that these guys are gonna teach me in classroom. Hmm. ठीक है. क्लासरूम में अगर let's assume कि these people are going to talk about the 4 P's, 10 P's of marketing, ये वो, these people are going to teach me blue ocean strategy, ये वो. So I Hmm. have already gone through all of those things in the last 5 years. Hmm. तो मैं 20 लाख रुपए किस लिए खर्चूं just for the degree? Hmm. उससे अच्छा I work for somebody else. मैं 20 लाख तो 2-3 साल में कमा लूंगा. Hmm. ठीक है. So that was the that was the idea कि instead of spending that, let's not get into that right now. I will do it. I will do it when I get the chance for one reason. तुम MBA कॉलेज या आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट तुम कॉलेजेस में क्यों जाते हो? फॉर टू थिंग्स. एक तो ब्रांड वैल्यू. Hmm. कि अगर ब्रांड है तो यू कैन गेट इनटू मोर ट्रेडिशनल कंपनीज इजीली. Hmm. और सेकंड है कि तुम नेटवर्क बनाते हो. Hmm. राइट. यू MBA का I don't see any point in doing an MBA beyond making network with like the biggest form of people. Hmm. Okay. I don't see a point of doing MBA. तुम उससे ज्यादा मैनेजमेंट सीखना है, तुम किसी स्टार्टअप में काम करो, तुमको उससे ज्यादा मिल जाएगा सीख. Hmm. बट दैट इज द एंटायर पॉइंट एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट लेट गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि यू शुडंट हैव. ठीक है, टाइम मिलेगा मुझे. I am not too old for now to not get you into an MBA later on. Hmm. So that is the entire point of it कि तुम कॉलेज जाते हो भाई नेटवर्क के लिए. तुम Hmm. कॉलेज जाते हो अपॉर्चुनिटीज के लिए. Hmm. और जब कॉलेज ही तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई Hmm. तुम ये क्लासरूम के बाहर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, then what is the point of a college? Hmm. Fortunately, my college was जैसे मैं कॉलेज को because I had good like rapport with all these teachers, Hmm. administrative people, and I was giving them like regular stuff. Massive exams के टाइम पे 10 दिन के लिए आता था. The rest of the Hmm. time I was just working with other people. और Hmm. मैंने उनको बोल रखा था कि भाई I'm not going to sit for placement, so you don't have to be accountable for me. Hmm. So ये वो एक म्यूचुअल वो था. So Hmm. this is something that students need to be aware of कि भाई तुम 2 साल, because there are two में तुम ऑनलाइन MBA आज मैं 2 साल पहले कर लेता, आज मैं I would have been possibly graduating at this time. Hmm. I think I would have been massively unhappy because मैं
2 साल में शायद एक सेमेस्टर, बिकॉज आई हैव दिस वन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. He went to IIT. Okay, he scored. His rank was his all India rank was 81. Wow. Okay, in GATE CSE, and it's massively tough to crack GATE CSE. Okay, so he got into that, and वो IIT Bombay से पढ़ा. IIT Bombay में out of the 4 semesters he could only go to the IIT for 1 semester. Okay, because of the pandemic. Hmm. या बाकी उसका ऑनलाइन हुआ, एंड ही वाज मैसिवली अनहैप्पी. ही से उसको जॉब अच्छी मिली, एवरीथिंग, बट ही सेड कि आई मिस्ड आउट ऑन दैट आईआईटी लाइफ, Hmm. व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड, व्हिच इज एक्ट जहाँ पे तुम यू मेक कनेक्शंस विद सो मेनी पीपल एंड एवरीथिंग, तो वो मिसिंग हो जाता है. सो दैट इज व्हाई माय टेक इज कि इफ यू आर गोना डू मास्टर्स, जैसे अभी राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू डू माय मास्टर्स अब्रॉड. Hmm. Yeah. Right now, I have got enough work experience. I was like, okay, what is the next step for me, which I want to learn pretty much more. Hmm. So I am planning to do my masters, at least thinking. अभी एकदम Hmm. alpha stage में है, जब I'm just getting into this thought कि okay, I might just want to do it Hmm. abroad. And when I want to do it abroad, I want to do it from a college that I can get into and I can learn from like amazing people. Hmm. So I have a few people, like I might just want to go to Paris also because they have some really good colleges over there. So Hmm. these are the things that I'm looking at primarily. Hmm. क्योंकि आई आई फील कि इतना पैसा दे के इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अभी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, कॉलेजेस दे रही हैं, देन आई थिंक इफ यू डू नॉट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी इट गिव्स यू, क्योंकि हर कॉलेज अभी या तो प्लेसमेंट के लिए या तो पार्टनरशिप के लिए, Correct. बिजनेस के लिए, दे विल, कॉलेजेस का Correct. मेजर है कि उनको बच्चे चाहिए, बच्चे के लिए वो बनाएंगे 100%. नेटवर्क प्लेसमेंट के लिए, और बनाएंगे नेटवर्क कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी हो ताकि अगर हमारी कॉलेज से बच्चा जाए तो उसको मास्टर्स अच्छे यूनिवर्सिटी में मिल मिल जाए. जाए. Right. तो Right. कॉलेजेस ऑटोमेटिकली अपने आप पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग में लगा रहे हैं, तो तुम कॉलेज की नेटवर्किंग को यूज क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू यूज द Because नेटवर्क योर college कॉलेज access इज नहीं देते ऑलरेडी ना. बिल्डिंग? Because most colleges don't give you access to that network. आई Most थिंक colleges. मेजॉरिटी कॉलेज डज नाउ. लाइक आई फील कि I अगर think मुझे I एक्सेस think चाहिए, हाँ. अगर मुझे एक्सेस चाहिए किसी बड़ी कंपनी के साथ, द ओनली थिंग विच आई फील कि लाइक यू मेड अ गुड रैपो, दैट्स व्हाई यू गॉट इन रिटर्न कि चलो तुम सर्टिफिकेट दे देना, अटेंडेंस की फिक्र नहीं. कितने Right. सारे बच्चे ये करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव गट्स टू स्पीक टू देयर प्रोफेसर. Exactly. So that is the thing कि जब रूल बुक आया था फर्स्ट डे में हम लोग को दिया था, वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा था 80% अटेंडेंस नहीं होगा तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर एग्जाम्स. सो माई इमीडिएट रिएक्शन इज लाइक, भाई ये क्या हो गया? दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम ओके विथ, because I am someone possibly who would want to explore something elsewhere. या फिर मैं कॉलेज में ही I would want to work on some other people, on some other things, right? तो what I did was कि अच्छा ठीक है, चलो करते हैं, let's see what happens. तो वो टीचर्स के साथ तुमको बनाना पड़ेगा and everything. You have to take a chance. Teach, but that is the thing कि एक तो तुम अपने एंड से लो, ये तो है ही, but think of it. How many other people would have taken the chance if they did not have this rule? Or if they said, if you want to some relaxation on this, come with a good reason to the administrative office and we will talk. Let's see. अगर बोलते तो कोई ना कोई आता, एटलीस्ट 5 लोग जाते और who could have worked on something more than if they are, I'm hoping they are not unhappy right now, but they would have been able to work on something else, right? So that is what I think most colleges have the access, but colleges think कि अरे ये student access लेके क्या करेगा, and student सोचता है अरे मेरे को access कहाँ से मिलेगा. And more than that, I feel कि colleges को companies को दिखाना भी होता है ना कि बच्चा genuinely बैठ के पढ़ा है. अगर वो बच्चे से agreement नहीं करवाएंगे
कि Mm-hmm. 80% अटेंडेंस मिनिमम है, तभी हम तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने देंगे। और अगर कंपनी Right. जाके बोलेगी कि क्या तुम्हारा बच्चा क्लास में पढ़ा भी है, हमें हमें कैसे पता चलेगा तुम्हारा बच्चा जेन्युइनली पढ़ा है क्लास में? फॉर Right. दैट कॉलेजेस हैव टू शो कि भाई ये देखो 80% का अग्रीमेंट, Right. तब ये बच्चा बैठे। Exactly. That is the point. And हम लोग का college जो था, my college, that is their entire proposition. So I joined a college which was a wing of a college, which was the new private university of a college that has already been doing. That is literally the leading engineering college in Kolkata. हम्म Okay, the number one private engineering college in Kolkata, uska university. Okay, हम्म now the point is कि वो जब हो रहा ना कि अच्छा ठीक है यूनिवर्सिटी खोला, आई वाज इन द फर्स्ट बैच. तो हम्म the idea that they came, they were very simple about it. कि हम्म देखो, you study in our classes, we'll make sure that you get the placements. हम्म यही सिंपल है. एंड हम लोग का डिसिप्लिन अलग लेवल पे था. ठीक है, मतलब हम्म 9 बजे के बाद यू कैन नॉट एंटर कॉलेज, 5 बजे से पहले यू कैन नॉट लीव कॉलेज. मतलब तुमको वो प्रॉपर 9 to 5 स्केड्यूल तुमको, देवर ट्रेनिंग अस. ट्रेनिंग। ठीक है, हाँ, देवर ट्रेनिंग अस कि तुम इस सर्कल में ले, बिकॉज उसका प्रोपोजिशन यही है कॉलेज का, इस कॉलेज का, मतलब आर कॉलेज, कि तुम आओ, तुम पढ़ो, तुमको जॉब देने की, तुमको जो जॉब लेना है, वी विल फाइंड यू जॉब्स. हम्म ठीक है. एंड फॉर अ कॉलेज, for not for a college, I think in our graduation year, apart from like उस level के आसपास जितने भी college थे, we हम्म did better than almost, I think we did better than most colleges out there. हम्म ठीक है, because यही culture था. That is something जो teachers ने भी बहुत force किया and everything, कि almost ऐसे ऐसे लोग ना, जब से तुम देख के बोलते हैं भाई ये इसको जॉब मिल सकता है क्या, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई इसको जॉब मिलेगा. ठीक है, हम्म दीज पीपल गॉट इनटू गुड जॉब्स. हम्म ठीक है, आई थिंक. तो हमारे कॉलेज का ये था कि भाई ये है हमारा, यू कम, इफ यू वांट अ जॉब यू कम टू अस एंड यू विल गेट अ जॉब. तो ये कॉलेज ने फुलफिल किया. आई वोंट से एनीथिंग लाइक दिस, बट at the same time it did not fit well with me, but it fit well with any person who was just there to get a job. हम्म So I think it works like that. ट्रू, क्योंकि लाइक इंडिया में वैरायटी इतनी है ना लोगों की, एंड मोर देन दैट मेनी, लाइक हम देखते हैं कि भी चलो ये बंदा ठीक ठाक रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऑल दैट, बट वी डू नॉट नो हाउ मेनी financial ups and downs are there in person's family. So even बहुत. many people are like कि भाई बस एक जॉब मिल जाए क्योंकि घर Right. में पेट पालना है। And that is not wrong, because देखो तो हम्म when you have a thing, let's say कि तुम्हारा, you know, your family is dependent on you in some form or the other, and उस टाइम पे you're एंड just thinking कि भाई उस मेरे टाइम आई को फील कि कॉलेज का ये कल्चर काफी हेल्पफुल हो जाता है काफी ऐसी हेल्पफुल हो जाता है, सिचुएशन। बिकॉज हाँ, बिकॉज उसका फर्स्ट जॉब का, स्टूडेंट का फर्स्ट, ये भाई एक जॉब मिल जाए. हम्म ठीक है, एक जॉब मिल जाए. आज कितने सारे कोडर्स, आई नो सो मेनी कोडर्स who are still working in TCS. ठीक है, I'll give you this one example, TCS, and they are earning something around, let's say, 25 to 30K a month. हम्म ठीक है, बट एक जो Web3 में ब्लॉकचेन डेवलपर है, दैट guy is earning without even completing his college. ठीक है, that guy spends 3 months to understand Rust, which is the Solana का जो, I'll not get into the technicalities, but उसका the language which is used to build some blockchain apps. तो वो, this guy learns for 3 months, and this guy earns 40K, 40,000 US dollars a year. So this guy is earning around, I think it comes down to something like 2.5 lakhs a month. ठीक है, just from, so he's earning 10 times this guy, because ये एक risk taking factor आ जाता है. TCS right now in engineering circle, we call it like a government job right now. ठीक है, कि ये government job है, unless you are doing something really really bad, TCS is not going to lay you off. इतने सारे layoffs हुए, TCS did not do a single layoff.
Hmm. It took cuts from its own profits, but it did not lay off any person. Hmm. ठीक है, TCS ने ये किया. But many other of these startups जो तुमको 2.5 लाख पे करे और even let's say 50,000 पे करे, these people are not gonna give you that benefit of doubt. Hmm. कुछ होगा, possibly you will be the first person to leave the company. Hmm. तो वो एक risk taking factor आ जाता है. So that is why these people are willing to take like a what do you call it, a risk. एक trade होता है कि अच्छा risk Hmm. क्या है, reward है. And a lot of, for most of our Indian households, ठीक है, we would rather take a 25,000 का job that lasts me 10 years. Hmm. ठीक है. And I think इसको थोड़ा change करना होगा because nobody is working to their full potential. They might be busy. They might be super busy with their work. They might be working 12-hour shifts, but they are not working the best of their minds. Hmm. So I think ये थोड़ा सा different approach है Hmm. which we have to take. Hmm. True, true, for sure. So, कैसा लगा ये पूरा conversation? I think I loved it. I think we spoke about quite a few different things. Hmm. I think I did not speak in education about such detail about on any podcast yet. So I loved it. I thought I was just end up talking about marketing, but I really like talking about the education part of it as well. But yeah, for anybody listening, I think when it comes to formal education, take your own call. Don't listen For to sure. anybody. Don't listen to anybody who's saying कि don't listen to us, don't listen to me or Jay telling you कि college बेकार Hmm. होते हैं या college अच्छा होता है. There are two extremes to everything. कोई ना कोई आके तुमको बोलेगा कि college बेकार है, just drop out. कोई ना कोई आके तुमको बोलेगा कि college is literally the best place. Hmm. So you have to take your own call. Go to a career consultant if needed. These people Hmm. know better than Sure. you. So that is how you maneuver through these things. Don't rely on online data for this. You can use it to make your decision, but don't just rely on anybody's word because they don't know your subjective opportunities and subjective Hmm. circumstances at the moment. Hmm. Yeah. Sure, 100%. So thank you so much for coming on this Awesome. podcast. I Thank you, think Jay. It we can was have much lovely. more conversation on much different topics. Would love to have deeper conversations very soon. Sure. Thank you so much. Awesome. All the best. Subscribe to Jay Thakkar show. Yeah. Thank you so much. Yeah. Chalo. Bye. Thank you.